Hello everyone, welcome back on English Zone channel and with a new video of English Literature DSSP TGT examination, and we are discussing here the syllabus which is new syllabus, latest syllabus of DSSP TGT, and on that note we are here discussing the popular literature which is also prescribed in your latest syllabus of DSSP TGT examination. And what is popular literature? First of all, we will discuss that, and after that we will go for the important MCQ over 100 questions we will discuss. Popular literature की अगर हम बात करते हैं, popular literature is referred to as mass literature because most of the people रीड टू दिस काइंड ऑफ लिटरेचर, जो कि एक आम जनता, एक लोगों के जो मास ऑफ द पीपल है, लोगों की पहुंच तक, बहुत जो जनता है उनकी पहुंच तक जानी चाहिए। जो लोग हैं इस सोसाइटी, समाज में रहते हैं, इस कंट्री में रहते हैं, इस यूनिवर्स में रहते हैं, उनके तक वो पहुंचना, ये अर्थ पे रहते हैं, उनके तक वो पहुंचना, उसको हम मास लिटरेचर बोलते हैं। और कॉमर्शियल फिक्शन, इसको कॉमर्शियल फिक्शन भी बोलते हैं। कॉमर्शियल फिक्शन में आ जाता है कि उसमें अगर हम कुछ उसको एक तरीके से अडेप्टेशन देते हैं, लाइक फिल्म और टेलीविजन या किसी डेली सोप का अडेप्टेशन उसको देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल फिक्शन। फर्दर वी विल डिस्कस द टर्म पॉपुलर लिटरेचर encompasses a wide range of genre including romance, mystery, thriller, as I told you. In this popular literature you will get all kinds of fiction, science fiction, historical fiction. These works are also serialized, adapted into visual formats such as films or television. It must be in a serial form, in a series form it can be discussed, or it is also adapted in films or television and serve as commercial product in the publishing इंडस्ट्री। ये एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट के वे में आप तक पहुंचा जाता है, आप तक पहुंचाया जाता है। फिर बहुत सी बुक्स यू हैव सीन, उस पे बहुत सी मूवीज बनी है, बहुत सी उस पे सीरीज बनी हुई है, बहुत सी डेली शोप्स बने हुए हैं। तो वो दैट इज द काइंड ऑफ द लिटरेचर जिसको हम पॉपुलर लिटरेचर बोलते हैं, विच इज एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज। देखिए, हैरी पॉटर बुक है, बट हैरी पॉटर यहाँ पे जो सीरीज बुक दिया गया, इसको आप क्या, यू ऑल्सो सी दिस इन द फॉर्मेट ऑफ मूवी, मूवी की फॉर्मेट में भी ये अवेलेबल है। तो बुक्स के साथ साथ मूवीज में भी आपको ये दिख रहा है, एक विजुअल फॉर्म में आपको ये पूरा पिक्चराइज करके दिया गया है। तो यहाँ पे वही चीज है कि ये पॉपुलर लिटरेचर के फॉर्म में आते हैं, ऐसे जो वर्क्स जो कि हमें बुक के साथ साथ, रीडिंग के साथ साथ हम इसको एक विजुअल फॉर्मेट पे भी एक मास के पास अवेलेबल है, लोगों के पास अवेलेबल है, लोगों के लिए अवेलेबल है, वेरी इजी और इन अ चीप प्राइस, दैट इज द पॉपुलर लिटरेचर। और यहाँ पे हम बात करें हैरी पॉटर सीरीज की, हु इज द ऑथर ऑफ दैट, आंसर इज ऑप्शन बी, जेके रोलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस वर्क है जेके रोलिंग का, हैरी पॉटर सीरीज। हैरी पॉटर पे मूवी बनी हुई है, तो यहाँ पे हम इसे हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयड इज अ फेमस डिटेक्टिव नॉवेल बाय, दिस इज ऑल्सो डिटेक्टिव नॉवेल, और यहाँ पे भी ये भी एक फॉर्म में अवेलेबल है, किसी फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में। तो यहाँ पे मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयड इज अ फेमस डिटेक्टिव नॉवेल बाय, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी की अगर बात करते हैं, शी इज अ डिटेक्टिव नॉवेलिस्ट ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एरा एंड शी हैज रिटन approx 66 novels, detective novels and short story collection also she had written. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयड इज अ फेमस डिटेक्टिव नॉवेल बाय अगाथा क्रिस्टी, ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इट फीचर्स हरक्यूल Poirot and is known for its twist ending. Okay, this is the work of Agatha Christie. 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर साइंस फिक्शन नॉवेल बाय H.G. वेल्स। H.G. वेल्स का जो साइंस फिक्शन नॉवेल है, देखिए बहुत सी मूवीज ऐसी होती है जो साई-फाई होती हैं, जिसको हम साइंस फिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इन सब चीजों को जो बात कर रहे हैं, जो मॉडर्न टाइम के डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं, साइंस फिक्शन नॉवेल्स हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, हॉरर नॉवेल्स हैं, गोथिक नॉवेल्स हैं, इनमें जो फिक्शन है, इन पे जो कोई सीरीज या कोई पॉपुलर एक मूवी बन के आती है, तो वहां पे हम पॉपुलर लिटरेचर में उसको काउंट करते हैं, क्योंकि वो बुक के फॉर्म में तो अवेलेबल है ही, वो दैट इज ऑल्सो फेमस इन अ फॉर्म ऑफ विजुअल फॉर्मेट एंड दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द मास ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज द पॉपुलर लिटरेचर। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, दैट इज द साइंस फिक्शन ऑफ H.G. वेल्स के बारे में बात करते हैं। तो विच वन इज द पॉपुलर साइंस फिक्शन ऑफ H.G. वेल्स, वी हैव द आंसर इज टाइम मशीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन ये नॉवेल है, साइंस फिक्शन
टाइम मशीन, H.G. वेल्स का. नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन, डैन ब्राउन्स द डा विंची कोड फीचर्स विच फिक्शनल प्रोफेसर, विच फिक्शनल प्रोफेसर को, किस फिक्शनल प्रोफेसर को डा विंची कोड, ये है जो ये एक तरीके से ये फीचर करता है, लैंगडॉन ओलिवर, रॉबर्ट लैंगडॉन, या है लेसॉन लैगहम, या है आपका ऑप्शन डी रिचर्ड लैंगले. आंसर इज ऑप्शन बी. Robert Langdon is the correct answer. Dan Brown's Da Vinci Code features fictional professor Robert Langdon. Next one we have the number 5 question. Which of these is not a dystopian novel? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है which one is not a dystopian novel. Dystopian novel की अगर हम बात करते हैं तो Brave New World 1984, To Kill a Mockingbird या Hunger Games. Which one is not? That is option C. To Kill a Mockingbird is not a dystopian novel, and this is the work of Harper Lee. This is the novel of Harper Lee. ये नॉवेल है, डॉस्टोयेव्स्की नॉवेल नहीं है, और ये हार्पर ली का नॉवेल है. दिस इज ऑल्सो पुलित्जर प्राइज विनिंग बुक है. दिस इज नॉट अ डायस्टोपियन नॉवेल, दिस इज गोथिक नॉवेल, एंड ऑल अदर आर दी डायस्टोपियन नॉवेल, जिसमें हंगर गेम्स एंड 1984 की बात करते हैं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात करते हैं. But which one is not a dystopian novel? To Kill a Mockingbird. This is the work of Harper Lee, and this is a Pulitzer Prize winning book. Next, we will talk about next question. Here we have the number 6. Who wrote the पर्सी जैक्सन सीरीज? पर्सी जैक्सन की सीरीज को किसने लिखा है? पर्सी जैक्सन सीरीज रिक रॉयडैन, सुजैन कॉलिंस, या है वेरोनिका रोथ, या जे आर आर टॉलकिन. विच वन इज द करेक्ट आंसर? हु रोट द पर्सी जैक्सन सीरीज? ऑप्शन सी इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. रियॉर्डन. Rick Riordan is the answer. Next one we have the number 6, 7 question. In Twilight, Edward Cullen belongs to which supernatural category? Edward Cullen का जो कैरेक्टर है ट्विलाइट में, ट्विलाइट आपने मूवी भी देखी होगी ट्विलाइट सागा के नेम से, और ट्विलाइट उसके अलग अलग पार्ट्स हैं इस मूवी के, तो यहाँ पे ट्विलाइट उसी की बात हो रही है. एडवर्ड कुलेन बिलोंग्स टू विच सुपरनेचुरल कैटेगरी? जो है वेयरवुल्फ, डीमन, घोस्ट या वैम्पायर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वैम्पायर. Next one we have the question number 8. The Shining is a horror novel by Stephen King, Edgar Allan Poe, Neil Gaiman, या है Peter Straub. Answer is option A. Stephen King is the correct answer. The Shining is an horror novel by Stephen King. We have the number 9 question. The Lord of the Rings trilogy is written by. Friends, you must have watched this series, Lord of the Rings, on OTT, and this is a series जो कि बनी हुई है किसी बुक पे, and you have to go for the right answer. Who had written this trilogy? This is the trilogy written by, option B is the correct answer. J.R.R. Tolkien is the correct answer. Option C. बहुत ही फेमस, बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज है, The Lord of the Rings. Next one, number 10. 50 Shades of Grey belongs to which genre? Science fiction, fantasy, या है erotic romance, या है आपका historical fiction. Option C is the answer. This is a erotic romance. The 50 Shades of Grey belongs to the erotic romance, and there is also a film on this work, 50 by the same title, 50 Shades of Grey, और सीरीज भी है इस पे, और ये नॉवल सीरीज है 50 Shades, जिसमें लिखा जो है वो है ब्रिटिश ऑथर E.L. James ने लिखा है. Because this is a erotic romance, so there is a kind of sexual things you will get while reading this book, and if you watch a film, you will get that kind of scenes here also. So 50 Shades of Grey, that is the work of E.L. James. Next one, and this is a erotic romance. We have the number 11 question. Who wrote The Alchemist, a popular philosophical novel? The Alchemist, popular philosophical novel, was written by Paulo Coelho. We have the answer. Option A is the correct answer. And The Alchemist we have, that is the drama by Ben Jonson, but this is a novel by Paulo Coelho. Next one, number 12 question. The Discworld series was written by Neil Gaiman, Terry Pratchett, या है Douglas Adams, या Orson Scott Card. Answer is option B is the correct answer. Terry Pratchett is the correct answer. The Discworld series was written by Terry Pratchett. Next, we have the question, which novel by Margaret Atwood is considered speculative fiction?
ऑप्शन यहाँ पे है एलिस ग्रेस, या है द टेस्टामेंट्स, द हैंडमेड्स टेल, cat's eye. Option C is the correct answer. The Handmaid's Tale is the correct answer. This is the Margaret Atwood's speculative fiction. Number 14 question we have the Chronicles of Narnia is a series of fantasy novel by. This is a fantasy novel and there is also a series film based on this work, The Chronicles of Narnia. We have the author यहाँ पूछा जा रहा है who is the novelist of this the Chronicles of Narnia series. J.K. Rowling, C.S. Lewis या है आपका रिक रियॉर्डन, फिलिप पुलमैन. आंसर इज ऑप्शन बी, C.S. Lewis इज द करेक्ट आंसर. C.S. Lewis का ये वर्क है एंड ये 7 सीरीज ऑफ नॉवेल है, 7 फैंटेसी नॉवेल इसमें है. 15 नंबर क्वेश्चन, द मेज रनर वॉज रिटन बाय. मेज रनर वेरोनिका रूथ, जेम्स डैशर, सुजेन कॉलिंस या है जॉन ग्रीन. ऑप्शन बी इज द आंसर, जेम्स डैशनर इज द करेक्ट आंसर. मेज रनर पे भी मूवी है आपकी. तो ये जो है जो पॉपुलर लिटरेचर हम उन्हीं को काउंट करते हैं विच इज among the masses and which is among the visual form and series form in movie, in series or in serial forms we have. Number 16, the Good Omens is co-authored by. Good Omen is co-authored by Stephen King, Peter Stuff या है ऑप्शन बी नील गैमन या टेरी प्रैटचेट. ऑप्शन सी J.R. Tolkien या एंड C.S. Lewis. ऑप्शन डी रिक रॉल्डन एंड ब्रैंडन Sanderson. Answer is B option. We have the correct. Neil Gaiman and Terry Pratchett is the correct answer. Good Omens is co-authored by these two novelists. Number 17. Which author created the character Sherlock Holmes? Sherlock Holmes की बात हो रही है. Sherlock Holmes ये हमारा एक डिटेक्टिव नॉवेल है. दिस इज ऑल्सो सीरीज ऑफ नॉवेल जिसमें हमने इसकी मूवी भी देखी हुई है. We have also have seen this Hollywood movie of the Sherlock Holmes, the great detective we have. यहाँ पे हम डिटेक्टिव नॉवेल बोलते यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ. एंड हु विच ऑथर क्रिएटेड दिस कैरेक्टर शेरलॉक होम्स. यहाँ पे उस ऑथर के बारे में पूछा जा रहा है जिसने इस डिटेक्टिव को यहाँ पे पूछा है. इस कैरेक्टर को एक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जीके चेस्टरटन, आर्थर कॉनन डॉयल या है एडगर एलन पो, डैशियल हैमेट. आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आर्थर कॉनन डॉयल इज द करेक्ट आंसर. दिस कैरेक्टर शेरलॉक होम्स ये डिटेक्टिव होता है यहाँ पे, इसी से बेस्ड ऑन डिटेक्टिव नॉवेल है, डिटेक्टिव है ये फेमस डिटेक्टिव. So Arthur Conan Doyle had created this character Sherlock Holmes. Next, number 18. The Girl with the Dragon Tattoo is originally written in which language this is written? This is written in Swedish language. Option B is the answer of the question number 18. We have here the question number 19. Which of the following is a graphic novel? Mouse, Catch 22, या है The Catcher in the Rye. Option D है Wuthering Heights. Answer option A is the Mouse is the graphic novel we have. And this is written by American cartoonist Art Spiegelman. This is the name of the novelist who had written this novel, graphic novel, Mouse, and he was the American cartoonist Art Spiegelman was the name of that man. Number 20. To All the Boys I Have Loved Before is a YA romance by. YA romance जो होता है उसका पहले आपको ये समझना होगा what is YA romance. वॉट इज वाई रोमांस रिलेटेड बुक या जो भी है, ये आपका होता है जो यूथ पे होता है, यंग अडल्ट, YOUNG यंग अडल्ट. ठीक है, YA का मतलब हुआ यंग अडल्ट रोमांस. मतलब यहाँ पे बात हो रही है जो नॉवेल्स जो होते हैं, जो रोमांटिक नॉवेल्स है, जो चीजें जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स के लिखे, यंग एज के लोगों के लिए लिखी जाती है, उन पे बेस्ड ऑन होती है, दैट इज रिलेटेड टू YA रोमांस. एंड टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर इज अ वर्क बाय, दिस इज अ वर्क बाय ऑप्शन ए जेनी हैन. दिस इज द जेनी हैन. और ये जो होता है दिस इज फॉर द टीनएजर्स के लिए होता है. नेक्स्ट नंबर वी हैव द गूज़बम्प सीरीज इज टारगेटेड टुवर्ड्स. दिस सीरीज गूज़बम्प सीरीज is targeted towards adults, teenagers, children या है आपका scholars. Option C is the correct answer, children. Children novels भी होते हैं, children fiction भी होते हैं. You have gone somewhere in a library or in a book store, you must have seen books related to that जो कि categorized होती हैं. This is for the fiction, this is non-fiction, and this is for children, for adults, for
experience and for business, and all these things were categorized in bookstore. So this is the Goosebumps series is targeted towards the children. Next number, we have the question. The Twilight Saga. Twilight Saga, I have already told you, this is a work, this is a novel, and a film is also based on this work. Who is the werewolf that competes for Bella's affection? एडवर्ड कुलन या है आपका जैस्पर हेले, जैकब ब्लैक, एमेट कुलन. आंसर इज जैकब ब्लैक. जैकब ब्लैक इज द करेक्ट आंसर. जो कि एडवर्ड कुलन होता है वो यहाँ पे वैम्पायर यहाँ होता है, बट बेला के अफेक्शन के लिए जो compete करता है वेयरवुल्फ वो होता है यहाँ पे जैकब आपका ब्लैक, जो कि एडवर्ड कुलन से compete करता है. तो ऑप्शन सी इज द आंसर. If you have watched the movie, you must know the characters of the Twilight Saga. We know. Number 23 question को देखते हैं. We have the question. Divergent is set in post-version, apocalyptic version of which city? Divergent is based on option B, Chicago. Chicago is the city for which the post-apocalyptic work Divergent is based on. This is the question number 24. What is the name of the school Harry Potter attends? Harry Potter किस स्कूल को ज्वाइन किया था? You have to go for the right answer. If you have gone through this movie or you have read this book, you must know the answer. Drumstrange या Box Baton, Elvermorny या है Hogwarts. Answer D is the correct answer. That is the name of the school which Harry Potter attended, that was Hogwarts. Next one, 25 question. Which of the following is not a character from the Lord of the Rings? Frodo Baggins, Gandalf, या है Aslan, Legolas. We have the answer. Aslan is not one of the character from the Lord of the Rings. Aslan is from the Chronicles of Narnia. Okay, this is from the C.S. Lewis का जो वर्क है The Chronicles of Narnia. This character Aslan is from that. बाकी के character Frodo Baggins and Gandalf and Legolas are from the Lord of the Rings. 26 we have. Which book series features a character named Tris Pryor? Tris Pryor का character किस वर्क में देखने को मिलता है? Twilight, The Maze Runner, Divergent या Hunger Games. Option C is the correct answer. Divergent. And this is the work of Divergent is a work of Veronica Roth. Next we have the question. Which author wrote the Bridgerton romance series that inspired a Netflix show? Which author wrote the Bridgerton romance series? और इसने एक नेटफ्लिक्स सीरीज शो को इंस्पायर किया, वो आपको बताना है. दैट इज जूलियन क्विन या सारा मैकलेन, टेसा डारे या है क्लीन हूवर. Whose work is this? Answer is option A. Julia Quinn. This is the work of Julia Quinn, and this is a romance series, or you will get on Netflix by the same name. आपने बताया रोमांस सीरीज मैंने बात भी की, एंड इसको जो लिखा हुआ है वो जूलिया क्विल ने लिखा हुआ है. दिस सीरीज अबाउट अ फैमिली जिसमें सिबलिंग्स होते हैं, 8 क्लोज सिबलिंग्स हैं जो कि अपने लव की तलाश में होते हैं, प्यार की तलाश में एक कोशिश करते हैं. तो दिस इज दी ब्रिजर्टन. ओके. 28. द नोटबुक इज अ रोमांस नॉवेल बाय. आंसर को देखते हैं. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28. ऑप्शन सी, निकोलस स्पार्क. Nicholas Spark is the novelist of this romantic novel, The Notebook. Number 29. The character Nancy Drew is primarily associated with which genre? Nancy Drew is associated with mystery. Option C is the character. Option C is the answer. If we talk about this character, where we get this character? And by the same name, Nancy Drew, a mystery stories. इसकी protagonist है. She is very courageous and independent girl, and also at the same time she is intelligent, and also she is a amateur detective. Number 30 question को देखते हैं. Which novel begin with the line Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Private Drive? Harry Potter and Goblet of Fire,
हैरी पॉटर एंड हाफ ब्लड फ्रेंड्स, या है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। ये सभी जो है हैरी पॉटर सीरीज के टाइटल्स हैं, जो इनके पार्ट्स हैं उसके टाइटल है दिए गए हैं। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हैरी पॉटर and the philosopher's stone, this line is the opening of the novel Harry Potter and the Philosopher's Stone. The line is Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Private Drive. Answer is option C. Number 31 we have, who wrote the Miss Marple series of detective fiction? Agatha Christie, Dorothy L. Sayre, yeah, option C है Naomi Marsh या Ruth Rendell. We have the correct answer, Agatha Christie. Miss Marple is a series of detective fiction that is from the Agatha Christie. Agatha Christie की बात करते हैं, she was the detective novelist. 32 we have, It Ends With Us is a bestseller written by Taylor Jenkins Reid, Colin Hoover, Christina Lauren या Emily Henry. Answer is option B. Colin Hoover is the correct answer. We have the number 33 question. Who is the author of the book Thief? The book Thief is the work, and who is the author? Answer, we have the option C, Marcus Jussac. Option A is the correct answer. Number 34 को देखते हैं. The Princess Diary series was written by, the Princess Diaries was a series. This was written by option B, Meg Cabot. Meg Cabot is the correct answer. 35 we have, who is the author of American Gods? Terry Pratchett, Neil Gaiman या George R.R. Martin, Alan Moore. Answer is option B. Neil Gaiman is the correct answer. The author of American Gods is Neil Gaiman. Number 36. Which YA fantasy, जिसको हमने बताया था youth and adult fantasy series, features a war between angels and vampires? We have the answer Hush Hush. Option we have the Hush Hush या City of Bones, Fallen, Shadow and Bone. Answer is option B. City of Bones is the correct answer. By Cassandra Clare. Cassandra Clare की ये नॉवल है, फैंटेसी नॉवल है, वाई फैंटेसी सीरीज, जिसमें फीचर होता है क्या कि एक एंजल एंड वैम्पायर के बीच का एक वॉर है. नंबर 37 क्वेश्चन, विच पॉपुलर ऑथर created the Alex Cross detective series? Alex Cross is a detective series, and who had created this? Answer is option C, James Patterson is the correct answer. 38 we have, A Song of Ice and Fire series is the basis of which famous TV show? Song of Ice and Fire, this is the book, and which famous TV show is based on this book? Vikings या Game of Thrones, Witcher, Ring of Power, The Rings of Power. Answer B is Game of Thrones. Game of Thrones भी बहुत ही बेस्ट सीरीज है, मस्ट वॉच सीरीज है, ये OTT पे अवेलेबल है. तो दिस इज सीरीज दैट कम्स फ्रॉम द अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, एंड दिस इज द सीरीज रिटन बाय नॉवेल, वो जो है फैंटेसी नॉवेल है, और ये लिखा है जॉर्ज R.R. मार्टिन ने. जॉर्ज R.R. मार्टिन was the novelist who had written A Song of Ice and Fire, and the famous TV show which is based on this work is Game of Thrones. Next one, number 39 we have, what is the genre of Ready Player One by Ernest Cline? Ernest Cline की book Ready Player One is about which genre? Romance, dystopian, sci-fi या है आपका crime thriller, historical fiction? Answer is option B, dystopian sci-fi. 40 we have the question number, The Shadowhunter Chronicles is book series by, this is the book series by whom? Options we have here, Sarah J. Maas या है आपका Cassandra Clare, Veronica Roth या Lani Taylor. Options we have, and the answer is option B, Cassandra Clare is the correct answer. The Shadowhunter Chronicles is a book series by Cassandra Clare. Option B is the answer. Number C, next number question 40. The Subtle Art of Not Giving a Fuck is authored by. This is authored by Mark Manson, क्या है James Clear, and Ryan Holiday, Jordan Peterson. Options we have यहाँ answer is option A. Mark Manson is the correct answer. Option A is the answer of the question number 41 we have. Mark Manson का ये work है, the subtle art of not being giving a fuck.
वी हैव द नेक्स्ट वन क्वेश्चन 42 को देखते हैं। 42 क्वेश्चन को जो है हमारा, द मिडनाइट लाइब्रेरी एक्सप्लोर्स alternate lives of the protagonist and is written by Matt Haig, Taylor Jenkins Reid, Frederick Backman, Adam Silvera. Answer is option A, Matt Haig is the correct answer. 43 we have, which of the following authors is best known for romantic comedies like Beach, Red and Book Lovers? Emily Henry and Ali Hazelwood, Christina Lauren या है Taylor Jenkins Reid. Answer is option A. Emily Henry is the correct answer. This is the best known author for best known romantic comedies like Beach Read and Book Lover. 44 we have the question. Who is the author of Red Queen series? Red Queen series के author का name आपको बताना है. Answer is option A. Victoria Ayer is the correct answer. 45. 13 reason why a novel about teenage suicide was written by whom? This is the novel 13 reason why is written by J. Asher is the correct answer. 46. It Starts With Us is a sequel to which best-selling novel? Option C. It Ends With Us. It Ends With Us. This is the sequel of the novel It Started With Us. And both novels writer is Colin Cooper. Colin Hoover, sorry. यहाँ पे होगा. Colin Hoover is the novelist of both the work. It Started With Us and It Ends With Us. तो जो sequel है work बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स के, ये यहाँ पे कॉलिन हूवर है. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 47. हु इज द ऑथर ऑफ द थ्रोन ऑफ ग्लास सीरीज? थ्रोन ऑफ ग्लास सीरीज के ऑथर का नेम है सारा जे मार्स. देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आप यहाँ पे वर्क्स पढ़ रहे हो, दीज ऑल आर रिलेटेड टू एडेप्टेशन. जो इनका कहीं ना कहीं इन वर्क्स का आपको एडेप्टेशन देखने को मिलता है, या तो आपको यू विल सी इट इन अ फिल्म फॉर्म और इन अ सीरीज फॉर्म और इन अ डेली शो फॉर्म. तो ये सब जो है एक तरीके से हमें विजुअलाइज या विजुअल फॉर्म में अवेलेबल है ये सभी वर्क्स. इनको इसी वजह से पॉपुलर लिटरेचर कहा जाता है, बिकॉज पीपल हु आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग things, in reading novels, they are not addicted to that, they watch TVs and all these things, so उनके लिए वो फॉर्म में अवेलेबल है, इसीलिए इसको मास लिटरेचर बोला जाता है या पॉपुलर लिटरेचर बोला जाता है. नेक्स्ट नंबर 48 क्वेश्चन वी हैव, द सेवन हस्बैंड्स ऑफ एल्विन ह्यू was written by, this is written by option B, Taylor Jenkins Reid is the correct answer. Option B is the correct answer. Number 49 we have the Hunger Game. What is the name of the annual event where tributes fight to the death? The Hunger Games, this is the, what is the name of the annual event? You have to tell. The lottery, the gauntlet, yeah, the purse, the Hunger Games. Option D is the correct answer. The Hunger Games is the event which is organized there and which tributes fight to the death. And this is work, this is the novel written by Suzanne Collins. Novelist है Suzanne Collins. Next we have the question number 50. Which novel features a character named Lara Jean who writes secret love letters? Everything, Love and Gelato. Yeah, to all the boys I have loved before, 5 feet apart. Option C is the correct answer. To all the boys I have loved before is the correct answer. ये LA fiction है, जो कि YA fiction है, youth and adult fiction. Next one, question number 51. In the Maze Runner, who is the main protagonist? This is the answer, option A. Thomas is the main protagonist in the Maze Runner. 52. Who wrote Me Before You? Jojo Moyes is the correct answer. 53. The Night Circus was written by. The Night Circus was written by Erin Morgenstern. Erin Morgenstern is the correct answer. 54. The Alchemist, a popular allegorical novel, was written by. We have the answer. Paulo Coelho is the correct answer. Option B is the answer. Number 55 question. What is the main theme of the subtle art of not giving? The option C is the correct answer. Stoic philosophy and value-based living. Option C is the correct answer. Number 56. Rich Dad Poor Dad is a personal finance book by. This is also a book. And Robert Kiyosaki is the correct answer. Option A.
रॉबर्ट कियोसाकी इज द करेक्ट आंसर। और आप सभी ने अगर नहीं पढ़ी होगी तो मस्ट रीड बुक है। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर ये बुक बेस्ड ऑन है, रिच डैड एंड पुअर डैड, कि किस तरीके से आपको एक सोच रखनी चाहिए, हाउ यू कैन बी अ रिच, एंड आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, वहां पे सब चीजों को आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए फॉर योर फाइनेंसेस। तो इस सब चीजों के बारे में रिच डैड पुअर डैड में एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है। Next, number 57. Which novel features a young boy's friendship with a Jewish child during World War II? Which novel features? This is the boy in the striped pajama is the correct answer. इस नॉवेल ने जो है, इस नॉवेल में आप देखोगे यहाँ पे यंग बॉय जो फ्रेंडशिप करता है, एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ फिल्म। दिस नॉवेल इज a film is based on this novel. John Byrne is the correct answer. The novelist is John Byrne. John Byrne is the answer. ये नॉवलिस्ट है। द बॉय इज इन स्ट्रिप पिजामाज। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, द 5 AM क्लब वाज रिटन बाय, बहुत ही अच्छा वर्क है ये, और ये लिखा है रॉबिन शर्मा ने, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द 5 AM क्लब। नेक्स्ट वी हैव 59, एटॉमिक हैबिट इज अ पॉपुलर बुक ऑन हैबिट फॉर्मेशन बाय जेम्स क्लियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जेम्स क्लियर की बहुत अच्छी बुक्स हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये जरूर पढ़िएगा, एटॉमिक हैबिट्स, जो कि आपकी हैबिट किस तरीके से आपको एक तरीके से अट्रैक्ट करती है, हैबिट किस तरीके से आपके होने चाहिए और किस क्या चेंजेस वो आपकी लाइफ में ले आते हैं। दिस बुक इज बेस्ड ऑन दैट। 60 we have the question, which author is known for the Shatter Me series? That is the option B is the correct answer. Tara Mafi जो है ऑथर, वो शैटर मी के सीरीज के ऑथर हैं। द नाइट मिडनाइट लाइब्रेरी विच डील्स विद अल्टरनेट लाइव्स इज रिटन बाय, दिस इज रिटन बाय मैट हैग। आंसर option A is the answer. 62, the phrase okay okay is from which popular YA novel? This is from The Fault in Our Stars. Option C is the correct answer. The Fault in Our Star is the answer. 63 को देखते हैं, the selection series by Kara Cass is often compared to, the selection series is often compared to the Hunger Games. Option A is the correct answer. Next one, we have the question, the Song of Achilles, a queer retelling of Greek myth, was authored by. This is also one of the famous work. This is authored by Madeline Miller. Option A is the answer. Number 65, we have, who wrote the contemporary romance People We Meet on Vacation? This is the work written by Emily Henry is the correct answer. Option B is the answer of the question. Who wrote the contemporary romance People We Meet on Vacation? Next one, we have in the silent patient, who is the patient? Answer is option A, Alicia Berenson. Option A is the answer of the question number 66. The name of the main character in Where the Crawdads Sing. This is the main character, Kya Clark. Kya Clark is the main character, and Delia Owens का ये work है. Next one, we have the 68. The popular Bridgerton series was written by. This was written by Julia Quinn. Option A is the answer. We had already gone through this question. Next number, what is the pen name of the author who wrote The Cuckoo's Calling? The pen name of this author is option B, Robert Galbraith. Option B is the correct answer. Robert Galbraith is the correct answer, who had written this work under the pen name Robert Galbraith, and the work is Cuckoo's Calling. Number 70, in the book Thief, the narrator is the death. Book Thief में narrator कौन है? Death है. Next number 71, who is the protagonist in the Twilight? Protagonist Twilight में कौन है? Option B, C is the answer, Bella Swan. Next 72, the 100-year-old man who climbed out the window and disappeared is a novel by Jonathan Frederick Backman, Matt Haig या Mark Manson. Answer is option A, Jonathan is the correct answer. 73, we have, which of the following is a romantic thriller novel? The Hunting Game, Ugly Love, Verity या Book Lovers. Verity is the correct answer. The romantic thriller novel is Verity. Next, 74. The Love Hypothesis features a romance between a PhD candidate and a who is that? Next one, doctor, professor, या है lawyer या billionaire. Option
B is the answer, professor. 75 we have, what genre is It Ends With Us primarily categorized under? It Ends With Us primarily categorized under contemporary romance. So answer is option C is the correct answer. And It Ends With It, starts with it. This is both the work of the Colin Hoover. We have already gone through this work. Answer मैंने आपको already ये mention कर रखा है, but once more I'm giving you the novelist name. Number 76, what is the primary theme of the House of the Cerulean Sea? What is the primary theme of the house in the Cerulean Sea? The horror, ये इसका primary theme है, या magical realism and acceptance, या है crime and punishment, supernatural thriller? Option B is the correct answer. Magical realism and acceptance is the correct answer. Option B is the correct answer of the question number 76. And this is the work written by T.J. Klune. T.J. Klune novelist है इस वर्क के. Next one, 77. The Inheritance Games by Jennifer Lynn Barnes is best described as, this is a puzzle mystery. The Inheritance Game is a puzzle mystery by Jennifer Lynn. Next one, NHS People was written by, this was written by Frederick Backman. Option B is the correct answer of the question number 78. अगले क्वेश्चन को देखते हैं 79. Who is the protagonist in Twilight? We all had gone through. Option C is the correct answer, Bella Swan. And 80 number question, who is the author of best-selling novel The Veronica Decides to Die? Veronica Decides to Die is the famous and best-selling novel by, option B is the correct answer, Paulo Coelho is the correct answer. The Alchemist is also one of the other best-selling novel he had written. Next one, 81. The Silent Patient, a psychological thriller, was written by. Answer is option A. Alex Mike Lead is the correct answer. Option A is the answer of the question number 81. 82, we have the question. The Percy Jackson series is primarily based on. Percy Jackson series is primarily based on. The answer is option D, Greek mythology. तो option D को हम correct करेंगे. 83, we have, who created the detective character Jack Reacher? Jack Reacher is created by Lee Child. Option C. Option A is the answer of this question number 83. 84, we have, which genre does the novel Divergent by Veronica Roth belongs to? This belongs to the dystopian youth adult, dystopian YA novel, YA fiction से belong करता है. Divergent by Veronica Roth. Next one, we have 85. Which Stephen King novel is centered on a writer held captive by a fan? ये है स्टीफन किंग का नॉवल जो कि बेस्ड ऑन है, सेंटर्ड है, अ राइटर हेल्ड कैप्टिव बाय अ फैन, और यहाँ पे आंसर है मिजरी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और द क्वेश्चन नंबर 85. 86, where in Twilight, the Twilight saga belongs to which sub-genre of popular fiction? This belongs to the urban fantasy romance. Option A is the correct answer. 87, Agatha Christie's The Murder of Roger Ackroyd is famous for. This is famous for, option B, unreliable narrator twist. The novel shocked readers with its innovative narrative technique where the narrator is revealed to be the murderer. ठीक है, नरेटर जो है वो रिवील्ड होता है कि खुद ही मर्डरर है. तो यहाँ पे जो this is the novel which shocked the reader, and Agatha Christie का novel The Murder of Roger Ackroyd is famous for that reason. 88, we have, who wrote the Millennium Trilogy, The Girl with the Dragon Tattoo? This is the work, Stieg Larsson is the correct answer, option C. 89, which author wrote the psychological thriller Behind Closed Doors? This is based on, this is written by B.A. Paris. Option B is the correct answer. Number 90, which of the following is a graphic novel by Alan Moore? We have the answer, that is B for Vendetta. Vendetta, V for Vendetta is a graphic novel by Alan Moore. We have the next one, 91. What is the primary genre of the Da Vinci Code? This is the genre thriller conspiracy. Option C is the answer. This is the thriller conspiracy fiction, Da Vinci Code. 92. Which of these author is best known for courtroom dramas? John Grisham.
John Grisham is the author known for his courtroom dramas. 93 we have The Alchemist by Paulo Coelho was originally written in, this is written in Portuguese language में ये लिखी गई है. 94 Looking for Alaska is a novel written by, this is written by John Green. Option C is the correct answer. Number 95, The Subtle Art of Not Giving Fuck belongs to which genre? We have gone through, I think. This is belongs to self-help and pop psychology. Self-help book है. Giving Fuck belongs to which genre? This belongs to self-help. Option A is the correct answer. Mark Manson का work है ये. This is non-fiction work. 96 we have, which thriller has the twist You Never Saw Me Coming? Silent Patient is the correct answer. Alex Mike Lead का ये work है. So this is the thriller which has a twist You Never Saw Me Coming by, that is the thriller work. The Silent Patient है जो Alex Mike Leeds का work है. Next one we have the question where the Crawdad Sing combines. This is the fantasy and adventure. इसमें genre combined है या crime romance, history, historical and mystery, horror and satire. Answer C is the correct answer. Historical and mystery, two genres are combined in this work where the Crawdads Sing, and this is the work of Delia Owens. डेलिया ओवेंस का नॉवल है जो कि कमिंग मिक्सेस है कमिंग ऑफ एज, नेचर राइटिंग एंड अ मर्डर मिस्ट्री. ओके. 98 गेम ऑफ थ्रोन्स बिलोंग्स टू विच सब जॉनर? दिस बिलोंग्स टू दी ऑप्शन सी एपिक फैंटेसी. एपिक फैंटेसी ऑप्शन सी. जॉर्ज आर आर मार्टिन्स वर्क इज ऑफन कंपेयर टू टॉलकिन एपिक नैरेटिव. ठीक है, इनका जो कंपैरिजन है वो टॉलकिन्स के एपिक नैरेटिव से होता है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको एपिक फैंटेसी काउंट होता है ये. 99 in the Maze Runner, what is the central challenge faced by the character? And we have the option surviving the apocalypse, escaping a deadly maze, winning a television competition, televised competition, or solving a murder. Option B is the correct answer. Escaping a deadly maze. This is the story blend action, dystopian, and science fiction. Option B is the answer. The Maze Runner, and this is the novel based written by James Dashner. This is a dystopian novel. Now 100. Which character features in a Court of Thorns and Roses series? This is the book series. ये है Court of Thorns and Roses series. और किस कैरेक्टर को फीचर यहाँ पे किया जाता है या कौन सा कैरेक्टर इसमें मिलता है? क्लैरी फेयरचाइल्ड, फेरे एर्किरॉन या है बेला स्वॉन, हेजल ग्रेस. ऑप्शन बी इज द आंसर. फेरे एर्किरॉन is the correct answer. And this is the work of Sarah J. Maas, mixes fantasy, romance, and fairy tale retellings. Number 100. It Ends With Us tackles which serious theme? It is related to domestic abuse. It Ends With Us, जिससे हमने बात की, कॉलिन्स होवर का वर्क है ये, और यहाँ पे जो बात हुई है जो किस सीरियस थीम को डिस्कस करता है, दिस इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक अब्यूज. नेक्स्ट वन 102. The term YA in literature stands for young adults is the correct answer. Option B, जिसके बारे में हमने बात की थी, इसको ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर रखा था. YA fiction is aimed at the readers aged 12 to 18, मतलब टीनेजर्स के लिए ये YA जो लिटरेचर है, YA adult लिटरेचर है, बट enjoys a broader readership, मतलब ये है उनके लिए, बट औरों ने भी इसको पढ़ा हुआ है, इस तरीके के लिटरेचर को पढ़ा हुआ है. 103 we have Paperstown is a novel by John Green. Option C is the correct answer. It explores the theme of identity, adventure through a teenage mystery. The Da Vinci Code was banned in several countries due to religious controversy. Option C is the correct answer. This novel suggests alternative view on Christianity and Holy Grail. Next one, option 105 question. 50 Shades of Grey originated as a fan fiction of Twilight. This was originated as a fan fiction, and E.L. James initially published it as a Twilight fan fiction called Master of the Universe. 106 Before We Were Strangers by Rennie Carlino is mainly about, this is about lost love and reconnections. Before We Were Strangers, a couple reconnects after a year apart in this emotional second chance romance.
107 we have in the seven husbands of Evelyn Hugo. Evelyn is a that is option C, Hollywood actress. एवलिन हु का ये वर्क है ह्यूज का दो जिसमें वो द सेवन हस्बैंड ऑफ एवलिन ह्यूज जिसमें वो हॉलीवुड एक्ट्रेस होती है. दिस नॉवल क्रॉनिकल्स हर glamorous and scandalous life in old Hollywood. So friends, this was all we had in today's class related to popular literature, which is prescribed in your DSSB TGT English literature syllabus, and I hope this would be very helpful for your exam point of view, because पॉपुलर लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं, वी ऑल नो एंड वी ऑल हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चंस एमसीक्यूज. यू मस्ट हैव सीन दैट the most of the MCQs are related to the book which has some adaptation in a movie form or in a series form. So ये सभी जो popular literature है, because most of the people watch movies and they had gone through these work with the help of movies and series. जैसे बहुत से लोगों ने हैरी पॉटर की बुक्स नहीं पढ़ी है, शर्लॉक होम्स को नहीं पढ़ा है, दे हैव सीन द मूवीज, दे हैव सीन द सीरीज रिलेटेड टू दैट. गेम ऑफ थ्रोन्स की बात हम कर लेते हैं. तो ये सभी जो बुक्स हैं, इनके जो एडेप्टेशन है फिल्म या सीरीज के फॉर्म में, we have gone through that, and that's why this is known as the popular literature में count होता है. Even they are from the different genre, from the dystopian genre, dystopian fiction है या historical fiction है लिखे गए हैं, sci-fi fiction है इनका, या तो ये आप बात कर लो romantic fiction है. But what we have now, these kinds of books we have in books form also for the readers who enjoy reading, but also for that men or women or for that mass who want to go through the graphics of these things and in a digital form or in a आप कह लो इमेज फॉर्म में जिसमें जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो उनके लिए मूवीज एंड सीरीज का एडेप्टेशन है, इन सभी वर्क का एडेप्टेशन दिया गया है. तो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द क्लास वेरी मच and you are preparing well for your examination. Stay connected for next class related to DSSB TGT English. Thank you for watching this.